Good evening, sir. Myself is Satveer Singh, and today I am discussing about the circle. So, I will start with the basic definition of circle. So, definition I will start. It is a locus of a point whose distance from a fixed point is always constant. Fix. So that fixed point is called center, and fixed distance fixed distance is called radius of circle. So if I consider, according to definition, this is my fixed point C, and CP is fixed distance. Let CP is R and C fixed point is whose coordinate alpha comma beta. If I consider vary point P is x comma y, so by distance formula Cp is equal to R on squaring both sides, Cp square is equal to R square. That will be x minus alpha square plus y minus beta square is equal to R square. So this gives away us a equation of circle if we know the center and radius of the given circle. So we can find the equation of circle. Now we will move forward. Next type is we will discuss about a standard case if center is origin. If center is origin, then C becomes 0, 0 means alpha and beta both become 0. So equation will be x square plus y square is equal to R square. That is called standard equation of circle. Now if we consider second degree general equation, which is ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is the second degree general equation, and this will represent a circle. This will represent a circle if I expand the equation 1, that will be this one, and second general equation represent a circle if and only if first condition, that will be coefficient of x square should be equal to coefficient of y square, and second coefficient of xy should be 0. These two are strictly conditioned. If data satisfy, then we say that this equation will represent a second general equation. So if I put a is equal to b, that means a equal to b, and this implies h equal to 0. So if I apply this condition in equation number 2, then I will have ax square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Let a is equal to 1. That means a is equal to 1. That means if I divide the equation by a to make the coefficient of x square and y square equal to 1, or
I put a equal to 1, then equation become x square plus y square plus 2gx plus 2ay plus c is equal to 0. This is the general equation of circle. Okay, so this is the general equation of circle, and we know that equation 1 is also the general equation of circle. So I can compare both equation. On comparing both the equation, I will have g is equal to minus alpha, or we should say alpha is minus g and beta is minus f. If I compare the coefficient of x equal to coefficient of x and coefficient y equal to coefficient of y in both equations, then I will have center edge g square plus f square minus c is equal to, so center will be minus g comma minus f, and radius is equal to under root g square plus f square minus c. Now we will discuss about the nature of circle. So nature of circle basically depend the value of under root g square plus f square minus c. So g square plus f square minus c will have three types of natures. First, if this is greater than 0, then circle is real. If this quantity is 0, then circle is a point, or say point circle. If third one, that is negative, that means circle is imaginary. So in this way we find the nature of circle. So using this condition we can check whether function circle is real or point or imaginary circle. Next we move forward that diametric form of circle. डायमेट्रिक फॉर्म से हमारा मतलब है कि सर्कल, if end points of diameter of circles are given, then we can also find the equation of circle. Suppose we have a circle whose end points of diameter are x1 y1 or x2 y2. Then by property we know that if we join C point with the end points of diameter, then AC and BC will be at right angle if A and B are end point of circle, then end points of diameter of circle, then for C whose coordinates suppose are x, y, then AC will be perpendicular to BC. So slope of AC, we know that slope of
AC into slope of BC will be minus 1, and we know that slope will be AC y minus y1 upon x minus x1, y minus y2 upon x minus x2 is equal to minus 1. So on simplifying, we can find the equation of circle x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2. That is the standard result of circle whose endpoints of diameter are given. So let's remove some question. If 4 points suppose 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 2k, 3k are concyclic, then find all possible values of k. In the given question, we have to find the value of k with condition points are concyclic. Concyclic means points are lying on the circle. So whenever we solve the question in geometry, we try to figure out all these points on the x and y axis. So suppose this is my xy coordinate and this point is 0, 0 and next one will be 1, 0 and this one will be 0, 1. I can easily draw these points on xy plane. So when I join these points, then I find that these two points, these two lines are at 90 degree. That means 1, 0 and 0, 1 are the end points of diameter. So we find 0, 1 and 1, 0 are end points of diameter. So using equation, so equation of circle will be x minus x1 means x minus 0, x minus 1 plus y minus 1 y minus 0 is equal to 0, means x minus 1 y minus 1, that will be equation of this circle. And we are also given the another point. Suppose P is 2k, 3k, which is also lie on this circle. So that point will also satisfy this circle. Since points 2k, 3k also lies on given circle, therefore this point satisfied. तो इसको satisfy करेगा. तो if I put the value of x coordinate 2k and y 2k in the equation 1, then I will have 2k minus 1 plus 3k minus 1 is equal to 0. If I solve this one, that will be k 2 into 4k minus 2 plus 3k minus 3 is equal to 0. So k is 0 or 2k, 4k, 7k is equal to 5, k is equal to 5 by 7. So I have two value, k is equal to 0 and k is equal to 5 by 7. So यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k. बट if k is 0, if I take k is equal to 0, then 2k, 3k become 0, 0. Means points, we are given 4 points, but if I take value of k is 0, then points will be only 3.
So on taking k is equal to 0, we have only 3 points, which is not possible क्योंकि 4 पॉइंट दिए थे. Therefore k cannot be 0. This will be rejected. So finally answer k is 5/7. That will be accept. ये एक्सेप्ट किया जाएगा. ओके, इसमें से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. कुछ इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. सर्कल के बारे में, सर्कल पासिंग इंटरसेप्ट और made on x-axis, made on y-axis, made on x-axis basically y सर्कल. सर्कल के द्वारा x और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम एक 1 by 1 करते हैं. सपोज दिस इज माई x एक्सिस and this is circle. So suppose circle is intersecting at point x1, 0 and B point is x2, 0. So intercept basically intercept on axis, suppose x axis is distance between intersecting points A and B. Similarly for y-axis. So first we start with the circle. We start with the x-axis. So let circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So when if you want to find the value of x1 and x2, then we have to solve the x-axis, and x-axis equation will be y is equal to 0. If I solve by put a y equal to 0, then equation become x square plus 2gx plus c is equal to 0. This is a quadratic equation which have two roots, x1 and x2. So we know that sum of roots will be x1 plus x2 is equal to minus 2g by 1 means minus 2g, and product of roots will be constant value by 1 means c, and AB is the intercept made on x-axis, और यही हमको फाइंड करना है. तो that will be y distance formula that will be AB mod of x1 minus x2, and we know that will be equal to x1 plus x2 square minus 4x1 x2, and we have already found out the x1 plus x2 is minus 2g, that is minus 2g square minus 4c, and that will be 4g square minus 4c. So AB will be means mod x1 minus x2 will be 2 under root g square minus c. Similarly CD, if I suppose this is my CD intercept made on y-axis, that will be 0, y1 or 0, y2. Mod y1 minus y2 will be 2 under root f square minus c. They are the standard result we have to remember. Okay. Now we solve some question. Find equation of a circle touching x-axis at a distance
at a distance, suppose say 3 from origin and having an intercept of length 2 on root 7 on y axis. ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस आपका 2013 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी, ये वाला जो आप देख सकते हैं, इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे इंटरसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही बात कर रहा है कि इंटरसेप्ट इसी के ऊपर सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमको बताया गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट of length 207 on y axis. We know that intercept on y axis, intercept means mod by 1 minus by 2, if I consider that is 2 under root f square minus c. If circle is x square plus y square plus, हमने कंसिडर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज द, बट गिवन क्या है, गिवन mod y1 minus y2 is 2 root 17, 2 root 7. So from 1 and 2, 2 under root f square minus c is equal to 2 under root 7. So 2 to cancel, on square f square minus c is equal to 7. This is equation number 3. Next, we have given the equation of circle touching x-axis at a distance 3 unit from origin. Now, x-axis circle touch x-axis. If circle axis को touch कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं, then a and b दोनों points coincide कर जाएंगे. Then length of intercept will be 0. Length of intercept made on x-axis will be 0, means mod x1 minus x2 value will be 0, which is 2 under root g square minus c, which is 0, which is g square minus c is equal to 0, means g square is equal to c. And one more condition is given, that circle is touching x-axis at a distance 3 unit from origin. So this is O and this is A. This distance is 3 unit. So when a circle touch, suppose this point is A, this point A, this coordinate will be 3, 0. Then this point center will be 3, beta. I don't know the value of beta. What I know the value of x coordinate of center of circle. So g will be 3. So g square alpha is here 3, and alpha is how much? Alpha is minus g. So 3 is equal to minus g. So from here g square is 9 is equal to c. So c value is 9. Using value c from 3 and 4, I can also find the value of this is g f c. Using 3 and 4, f square minus 9 is equal to 7, so f square is equal to 16, f will be plus minus 4. So we have the equation of circle, general equation of circle, x square plus y square plus 2gx plus 2y plus c is equal to 0. And here we have 3 variables g, f, c, and I find out all 3 variables g, f and c. So I can put the value of g, f, c in the equation number, suppose I say a.
तो इक्वेशन सर्कल, सो सर्कल्स हो जाएंगे आपके पास, टू इक्वेशन मिलेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g मीन्स -6x and plus 2f 8y and c 9 -9 equal to 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -9 इज 0। दो इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि सर्कल टच जो है वो एबव एक्स एक्सिस भी कर सकता है और बिलो एक्स एक्सिस भी कर सकता है। ओके, so this is the question which was asked in advanced 2013. Now I move next one. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे थोड़ा सा ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y minus p is equal to 0 and coordinate axes means x and y axis have exactly 3 common points। तो ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस में पूछा गया है, ये 2017 एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है और इजी भी है, क्योंकि अगर हम ज़रा भी थोड़ा सा भी ध्यान दें इस पर तो क्या होगा, इफ़ आई हैव दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, और सर्किल सेंटर होंगे आपके, सेंटर सी विल बी -2 -1 -2, एक्स कोऑर्डिनेट -हाफ ऑफ एक्स होता है कोएफिशिएंट एंड वाई कोऑर्डिनेट -हाफ ऑफ वाई कोएफिशिएंट, तो एक्स सेंटर होगा -1 -2, सो -1 है। और आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी वैल्यू ऑफ पी सर्किल हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। सो आप देख सकते हैं सर्किल जब भी कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करे या वाई एक्सिस को कट करे, सो अगर हम इसको ऑरिजिन से पास कराएं, देखिए 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, ओ ए एन बी। और कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ कोई भी इक्वेशन है जो अगर ऑरिजिन से पास होती है तो उस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है। इफ सर्कल पास थ्रू ऑरिजिन, तो ये 3 पॉइंट्स पे कट रहे हैं, देन इट कट्स एट 3 पॉइंट्स, और यही इसके सॉल्यूशन है, यही इसके कॉमन पॉइंट होते हैं। कभी सॉल्यूशन बोल देते हैं, कभी कॉमन पॉइंट बोलते हैं। सो एंड इक्वेशन आप बोलेंगे देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी will pass through origin if constant value means माइनस पी इज 0। सो यहाँ से आपके पी की वैल्यू आ गई 0। अब हम देखेंगे कि और कोई कंडीशन है, ये तो केस 1 हो गया, सपोज केस 2 देखते हैं कि 3 पॉइंट्स सर्किल जो मैक्सिमम है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जो मैक्सिमम है वो अगर कट करेगा तो आप देखेंगे ए बी सी डी एक साथ मैक्सिमम पॉइंट 4 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। 3 पॉइंट्स पे कट करने के लिए ऑरिजिन से पास होना चाहिए, वो केस ले लिया। और कोई केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो है यहाँ एक्स पर टच करे और वाई पर कट करे, या फिर वाई को टच करे और एक्स पे कट करे, ये दो कंडीशन है। एक्स पर टच वाई पर 2 पॉइंट पे कट करे, या फिर रिवर्स। इनवर्स में आपका क्या होगा कि वाई एक्सिस पे
टच और एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट करें। तो दोनों ही केस में क्या होगा, हमें ये जो क्वेश्चन है करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही जो अभी इंटरसेप्ट वाला फंडा लगाना पड़ेगा। तो उस फंडे में देखिए क्या होगा कि फर्स्ट केस के लिए इसके बारे में बात करें, इफ सर्कल टच एक्स एक्सिस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाता है। सो जी स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे जी इज -1, एफ इज -2 एंड सी इज आल्सो -p। जी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर है 1 और डेट इज -p। सो p आ गया आपका -1 एंड BC that will be BC should be greater than 0। ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि इंटरसेप्ट अवेलेबल है। तो ये होगा 2√f² - c greater than 0। स्क्वायर करेंगे f² - c greater than 0। f² is f is -2 that is -4 -c +p greater than 0 means p greater than 4। कुछ ऐसा केस बनेगा। सर्कल टच एक्स BC greater than 0, b² -c, b² - c, f², आपको f² कितना है, ओ f² तो +4 हो जाएगा, सॉरी +4। तो p greater than -4, यहाँ से ये आया। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आ रहा है p इज -1, आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये है -4 से ग्रेटर और यहाँ से आ रहा है -1। सो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 सिंगल पॉइंट आएगा। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास जो p का वैल्यू आ रहा है -1 आ रहा है। अभी हमने p0 निकाला था, यहाँ -1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस। इसमें अभी लिया था x को टच, अब लेंगे y को टच कर रहा है और x को कट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, सर्कल टच by axis if √f² - c is 0 means f² equal to c और f is -2 that is 4 is equal to -p। so p and √2√g² - c greater than 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो ही आपका 2 पॉइंट पर कट करेगा। सो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे g² - c greater than 0, g -1 square means 1 plus p greater than 0। so p greater than -1, equation number 3, equation number 4। so from 3 and 4 if I solve, value p is greater than -1, so this is -1 greater than -1 and another point is -4 which is this one। so there is no common point, therefore p is 5। यहाँ से हमको p5 मिला। तो फाइनल हमारे पास कितना आया, p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यू हमको मिली। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, 34 मिनट्स का हो गया। यही फिनिश करता हूँ मैं इसे। थैंक यू सर।